Yeah, 3 into okay. Exercise 1.2, solve the following equations, and this question is question 7. अच्छा इसमें अगर आप देख लें तो x प्लस वन ओवर एक्स एंड एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर, अगर हम x प्लस वन ओवर एक्स को लिख लें जैसे x प्लस वन ओवर एक्स, और अब हम इस पे स्क्वायर ले लें होल स्क्वायर, तो ये वही फार्मूला है, इज a प्लस b होल स्क्वायर, so it is a square plus b square plus 2ab. सिमिलरली ये मेरा x ab के बराबर है, b 1 और x के बराबर है, so my x would be a square would be x square, and b would be b square would be 1 over x square and plus 2ab. A is x and b is 1 over x, so x नोमिनेटर भी है और डिनोमिनेटर में भी है, so ये कैंसिल हो जाएगा. तो एक्चुअली x प्लस 1 ओवर x होल स्क्वायर इज इक्वल टू x square plus 1 over x square plus 2. अच्छा, यहाँ पे तो मेरे पास x plus 1 over x है. क्या मैं x square plus 1 over x square को in terms of x plus 1 over x लिख सकता हूँ? जवाब है जी हाँ, मैं लिख सकता हूँ, because here it is x square plus 1 over x square. If I shift this 2 to this side, I'm actually getting x plus 1 over x whole square, and if this minus 2, so on this side I'm getting x square plus 1 over x square. अच्छा, मैं x square plus 1 over x square को x plus 1 over x की शक्ल में लिख सकता हूँ. So 3 in this term is equal to x plus 1 over x whole square, and here I would be writing the 2 as well, and this is minus 16 into x plus 1 over x plus 26 है. अच्छा, ये 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है और इसके साथ भी हुआ है, so 3x plus 1 over x square, and this would be minus 6, and this is minus 16 into x plus 1 over x plus 26. Acha, minus 6 plus 26, I'm getting 20. So 3 into x plus 1 over x square, and it is minus 16 into x plus 1 over x. I'm getting 20 only. Yeah. So up to make our thing easy, let's assume x plus 1 over x is some kind of another variable. Let's suppose I'm having a function y which depends upon x, and this function is equal to x plus 1 over x है. So now write these functions in terms of y है, because x plus 1 over x ये आपको confuse करेगा. So 3 I would be writing is 3y square minus 16 into y plus 20. तो ये मैं फैक्टराइजेशन के ज़रिए बहुत इजी कर सकता हूँ. Let's suppose I'm having these three terms, and if I multiply my extreme terms, which are 3y square into 20, I'm getting 60y square. Now अच्छा, मैं मिडिल टर्म को उन दो टर्म से रिप्लेस करूँगा. अगर इनको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ उन टर्म्स को, तो मुझे 16y स्क्वायर मिलना चाहिए. तो वो नंबर क्या हो जाएगा, क्या हो गए, इट इज़ 60y स्क्वायर. अच्छा, अब वही नंबर जिनको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, आई शुड बी गेटिंग 16y स्क्वायर, बट दोज टू नंबर्स अगर मैं उनको ऐड कर दूं, तो आई शुड बी गेटिंग minus 16y. So those two numbers are minus 10y and minus 6y. So if you multiply these two numbers, you are getting positive y square, but when you add them, you are getting minus 16y. So replace minus 16y with these two numbers. With 3y square, it is minus 10y, it is minus 5 plus 20 equal to 0. अच्छा, अभी इस टर्म और इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है y.
अच्छा -6y it is। क्या इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन है y, तो राइट योर 3y, यहाँ से कॉमन ले लें -10। और इन दो टर्म में कॉमन क्या है इसमें? these are both the multiples of 2, yeah, so take 2 as your common from it, so you are getting uh, 3y and 10 here. But if you see, this is positive 3y minus 10, this is negative 3y plus 10, so either take a negative common from this term or either take a negative common from this one. So I would be taking मैं यहाँ से negative sign लूँगा, y it is 3y minus 10 and just take negative from here is common. This would be positive 3y and this would be negative 10. अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे देख लें तो ये 3y माइनस टेन यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, सो टेक दैट इज कॉमन। 3y माइनस टेन यहाँ पे मुझे मिल रहा है जस्ट y और यहाँ पे मुझे मिल रहा है 2, that would be equal to 0, so I'm getting this equation is 3y minus 10 equal to 0 and this one is y minus 2 equal to 0। अगर आप इसको मज़ीद सॉल्व कर दें, सो इट इज़ 10/3, it is uh, just positive 2। अच्छा, so I have assumed my y is uh, x plus 1 over x. So now that would be x1 plus 1 over x1 equal to 10/3, and that would be my x2 plus 1 over x2। तो अच्छा, 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 um, this is x1, so to eliminate x1 from the denominator, I can multiply x1 to both sides. Multiplying x1 to both sides, uh, multiply x1 to both sides, I am getting x1 plus 1 over x1 here, and here I am getting 10/3 into x1। Similarly, to this equation, 1 over x2 है, just multiply x2 to both sides। अच्छा, यहाँ पे जब x1 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो ये x1 स्क्वायर बन जाएगा, और इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये x1 by x1, and similarly it would be 10x1/3। सिमिलरली इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा सो x2 स्क्वायर और ये x2 डिवाइडेड बाय x2, और ये मुझे मिलेगा 2x2 है। अच्छा, सो x1 डिवाइड बाय x1 कैंसिल हो जाएगा, x2 डिवाइड बाय x2 कैंसिल हो जाएगा, सो आई एम गेटिंग है x1 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 10x1/3, and similarly I am getting x2 square plus 1 equal to 2x2। अच्छा, अब टू 3 को भी डिनोमिनेटर से एलिमिनेट करने के लिए जस्ट मल्टीप्लाई 3 टू बोथ साइड्स। 3x1 स्क्वायर प्लस 1 equal to 10/3 into x1 into 3। Similarly, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दें, x2 स्क्वायर minus 2x2 plus 1 equal to 0। अच्छा, तो ये मुझे मिल रहा है 3x1 स्क्वायर प्लस 3, और ये 3 इसके साथ एलिमिनेट हो जाएगा, सो आई एम गेटिंग 10x1 है। 10x1 को यहाँ पे शिफ्ट कर दें, सो 3x1 स्क्वायर माइनस 10x1 प्लस 3, एंड सिमिलरली। अच्छा, अगर ये देख ले तो इट्स जस्ट simple formula। Let's suppose if it is your a, suppose take your a is x2 and your b is 1, so if you recall, a minus b whole square is a square plus b square minus 2ab. Similarly, if your a is x2 and your
where b is 1, so it would be x2 square plus 1 minus 2x2. So if you see, this is the same shape that we have got here. So I can write just x2 minus 1 whole square here. And this is 3 3s are 9. So actually, if you just multiply, you can factorize. If you just multiply these both numbers, you are getting 3x1 square into 3 is 9x1 square. तो मुझे 10x की जगह ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 9x स्क्वायर मिल जाए. सो दोज टू नंबर्स वुड बी, और उन्हीं दो नंबरों को मैं ऐड कर दूं, सो आई शुड बी गेटिंग minus 10x. So what are those numbers? Those numbers would be, let's think about it, uh, plus into minus 10x1. So those two numbers should be 9x1 into x1. Okay, so these are negative 9, negative x1. So if we add negative x1 here and negative 9x1 here and negative x1 here, I'm getting minus 10x1. If I multiply those two numbers, I'm getting positive 9x square here. So I can replace minus 10x1 with these two numbers. 3x1 whole square minus 9x1 minus x1 plus 3 equal to 0. अच्छा, यहाँ पे आ जाएं. ये स्क्वायर है और ये दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें. x2 minus 1 whole square under root 0. अच्छा, तो आपके पास रहेगा ये cancel, under root 0 is 0, so x2 minus 1, x2 को वहाँ पे शिफ्ट कर दें. एंड यहाँ पे देख लें. सो यहाँ पे x भी है, x1 भी है, और यहाँ पे 3 है, और it is a multiple of 3 here which is 9. so take 3x1 is common. 3x1 जब मैं कॉमन लूँगा, यहाँ पे x1 रह जाएगा, यहाँ पे negative 3. Similarly, I would be taking negative 1 is common because यहाँ पे x1 minus 3 है. so ले लें x1 minus 3 equal to 0. यहाँ पे x minus 1 x1 minus 3 x1 minus 3, so इसको भी कॉमन ले लें. तो यहाँ पे रह जाएगा 3x1 minus 1 है. अच्छा, x1 minus 3 equal to 0 and 3x1 minus 1 equal to 0. so यहाँ पे रहेगा x1 3 जब यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे जब इसको सॉल्व कर दें positive by 3. so our solution set is 3 1 over 3, which is this one, and here it is positive 1.